हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इजी लो। सो आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ही आज का टॉपिक रहेगा हमारा। एमसीक्यू शुरू करते हैं। तो आज की कुछ लाइंस में आपको बोलना चाहता हूँ कि सफलता उसी को मिलती है जो अपनी मंजिल को देखता है और उसी की तरफ बढ़ता चला जाता है। बीच में आते हुए जितने भी पत्थर रोड़े रुकावटें आती हैं उनको वो प्यार और सहज से हटाता हुआ अपनी मंजिल की तरफ चलता जाता है। सो पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए, प्रेजर्वेंस रखिए। जल्दी जल्दी ही सबको मंजिल मिलेगी। हम सब प्रयास कर रहे हैं। सो वी ऑल गेट देवर मंजिल, अवर टारगेट, आवर गोल। वी विल श्योरली अचीव आवर गोल। ठीक है जी। तो चलिए आज की शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाउ मेनी टाइप ऑफ emergencies आर कंटेम्पलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 1, 2, 3, 4। So the correct option is option number C, 3. Next question. In Article 352, the term internal disturbances were replaced by the term armed rebellion by the Constitution 7th Amendment, 44th Amendment, 42nd Amendment, 40th Amendment. तो करेक्ट ऑप्शन बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 352 में इंटरनल, ये बेसिकली राजस्थान जेलों में जो उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है सिलेबस, मैं उसके बाहर भी जा रहा हूँ, आउटर कवर भी कर रहा हूँ, बिकॉज हमें कुछ नहीं पता। हो सकता है कि क्योंकि 2000 जो 13 जेएलओ हुआ था उसमें उन्होंने काफी बाहर से भी कवर किया हुआ था। 19 में तो स्ट्रिक्ट टू सिलेबस थे, तो मैंने थोड़ा सा आउटर भी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं, तो आप इनको भी करते चलिए मेरे साथ। तो करेक्ट ऑप्शन इज option number B, the Constitution 44th Amendment. Next question. How soon is imposition of national emergency required to be approved by the Parliament? Within 1 month of proclamation, within 2 months of proclamation, within 3 months of proclamation, and within 15 days of proclamation. चलिए आंसर बताइए। आप प्लीज कमेंट में भी अपने मेंशन करते रहिए आंसर्स को, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, मैं जो वीडियोस दे रहा हूँ आपको अच्छी लग रही हैं और आप भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सो प्लीज गिव एंड टेक होता है, तो आप भी मेरे को सपोर्ट करते रहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, within 1 month of proclamation. Which of the following does not justify imposition of national emergency? War, internal disturbance, armed rebellion, external aggression. Does not justify, इसके अंदर ये वर्ड ध्यान रखिए, क्या यूज किया इन्होंने? Does not justify. So correct option is internal disturbance. Next question. Unless approved by both the houses of the parliament, a financial emergency ceases to operate on the expiration of 4 months, 3 months, 2 months, 1 month. चलिए आंसर बताइए। करेक्ट ऑप्शन इज 2 months. ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6. Emergency provisions in Constitution of India have been borrowed from Constitution of United Kingdom, Constitution of India, Canada, sorry, Constitution of United States of America, Weimar Constitution of Germany. So correct option is Weimar Constitution of Germany. Question number 7. Power of the President of India to impose emergency under Article 352 of the Constitution on a particular part of the territory of India was introduced by the Constitution 44th Amendment Act, has been part of the Constitution since its inception, the Constitution 42nd Amendment, and is not available under the Constitution of India. Power of the President of India to impose emergency. चलिए आंसर बताइए। So it stands with C, the Constitution 42nd Amendment Act 1976. India since independence has witnessed national emergency on 1 occasion, 3 occasion, 4 occasion, no occasion. So correct option is B, 3 occasions. Question number 9. बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। Pick from the following the statement that does not accord with the provisions of the Constitution of India. मैं आपके साथ रीड कर रहा हूँ, साथ साथ ही समझते चलिए और आंसर फटाफट देंगे। While assuming to himself all or any of the functions of the government of the state by a proclamation under Article 356 of the Constitution, the President cannot declare that the powers of the legislature of the state shall be exercisable by or under the authority of the Parliament. Article 356(5) added by the Constitution 38th Amendment, which made to the satisfaction of the President in invoking Article 356 final and conclusive, which would not be challenged in any court on any ground, has been related by the Constitution 44th Amendment. Article 365 says that whenever a state fails to comply with or to give effect to any direction from the center, it will be lawful for
the president to hold that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution. Article 356 empowers the president to assume to himself all or any of the functions of the government of the state by a proclamation if he is satisfied that a situation has arisen in which the government of a state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution. चलिए आंसर दीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर बाई चांस आ जाते हैं, जैसे दिल्ली में बहुत बड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस टाइप लिखे होते हैं, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इनको जितना हैबिट बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको पिक करना है, पिक एंड चूज। पिक द करेक्ट हिंट। A bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall lapse on the dissolution of the Lok Sabha. A bill pending in Parliament shall lapse by reason of the prorogations of the Houses. A bill which have been passed by the House of the People is pending in the Council of States shall lapse on a dissolution of the House of the People. Option A, first and second are correct, third is incorrect, third is correct, 1 and 2 are incorrect, all the 3 are correct, none of the 3 is correct. Please give the correct answer. So correct option is option number B. Third is correct, 1 and 2 are incorrect. Pick the hint that accords with the provisions of the Constitution of India. Since the sums required to meet expenditure described by the Constitution of India as expenditure charged upon the Consolidated Fund of India are not submitted to the vote of Parliament, no House is competent to discuss these in estimates. Annual Finance Bill provides the legal authority for the withdrawal of sums from the Consolidated Funds of India after the grants under Article 113 have been made by the House of People. There shall be introduced a bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Funds of India, and it shall be lawful to propose amendments to such bill varying the amount of any expenditure charged on the Consolidated Funds of India. So 11th का correct option is option number C. Neither 1, nor 2, nor 3 is कोई भी। Then question number 12 पढ़िए। A bill that contains only provision dealing with the imposition, abolition, remission, alteration, or regulation of any tax is a money bill. The President of India is the final authority to decide if a particular bill is a money bill or not. A bill that contains only provision dealing with the appropriation of money out of Consolidated Fund of India is known as money bill. A bill that contains only provision dealing with the custody of the Consolidated Fund or the Contingency Fund of India, the payment of money is not into, or the withdrawal of money from any such fund is not a money bill. So 12th correct option is D. First and 3 are correct, second and fourth are incorrect. Question number 13. A money bill passed by the House of People and transmitted to the Council of State is deemed to have been passed by both houses if it is not returned by the Council of States to the House of People within 10 days, 30 days, 14 days, 20 days. So correct option is 14 days. Question number 14. Which of the following bill cannot be introduced first in the Lok Council of States? A bill for approval of proclamation to impose president's rules in a state, money bill, bill for removal of the president by impeachment, bill for approval of the proclamation of national emergency on account of war or external aggression or armed forces. चलिए 14 का आंसर बताइए। So correct option is B, money bill. Who can call joint sitting of both the houses of parliament? President, Speaker of the House of People, Chairman of the Council of States, Prime Minister. The right question, बहुत ही simple question. No need to waste time on this. So correct option is President. Question number 16. Who presides over joint sitting of Parliament? The Chairman of the Council of State in his absence of the Deputy Chairman in the absence of both the Speaker of the House of People. Speaker of the House of People in his absence the Deputy Speaker of the House of and Deputy Speaker both are unavailable. The Deputy Chairman of the Council of States, the President, a presiding officer elected by both the houses for joint sitting. Correct option बताइए। So correct option is B, the Speaker of the House of People. So next question is, rights conferred by Part 3 of the Constitution cannot be restricted or abrogated in their application to the member of the armed forces, the member of forces charged with the maintenance of public order, the member of the civil service charged with the peaceful conduct of election, person employed in connection with the telecommunication system set up for the purposes of forces charged with the maintenance of order. 17th correct option is option number C, the members of the civil services charged with the peaceful conduct of elections. So 18th आप पढ़िए, क्योंकि बिकॉज फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं पढ़ता रहूँगा मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, पहले बहुत लेंथी होगी जो मैंने ऊपर पढ़ा है।
So इसका करेक्ट 18 का करेक्ट ऑप्शन इज MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1987 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, द ताज अपार्ट फ्रॉम बीइंग कल्चरल हेरिटेज का क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, वीडियो को रोक के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए। So इसका करेक्ट ऑप्शन इज MC मेहता वर्सेस कमलनाथ 1997 सुप्रीम कोर्ट। Question number 20. By evolving the rule of precedent and stare decisis, the court have intended to achieve avoidance of irrationality, certainty and consistency in administration of justice, establishment of supremacy of the Supreme Court, establishment of the rule of law. So correct option is option number B. Certainty and consistency in administration of justice. So this is the last question but not the least. So thank you so much coming to Easy Law channel. होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी ही वीडियोस आगे आती रहेंगी कंटिन्यूटी में। तो आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर से ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। आप इसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। एक बटन प्रेस करने में और लाइक करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मेरे को थोड़े से हौसला मिल जाता है ताकि मैं आपके अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करता चलूँ। तो मैं बहुत ही जल्दी जो है सबसे पहले आप सबके लिए एविडेंस शुरू करूँगा फॉर GLO। फटाफट से ऊपर से भी बताता चलूँगा और वर्ड्स भी जो इंपॉर्टेंट आते हैं वो भी बताता चलूँगा और जो प्री के लिए मार्किंग होगी वो भी आपको बताता चलूँगा। तो आप उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बहुत अच्छे कंटेंट्स में लाते रहूँगा। अभी मैंने जस्ट शुरुआत की है अपने चैनल पे, धीरे-धीरे मैं हैबिचुअल हो जाऊँगा कैसे आपको डाटा देना है, कैसी चीज़ें कंपाइल करके भेजनी है। तो आप बस मेरे को सपोर्ट करते रहिए, प्यार दिखाते रहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू इज़ी लॉ। तो सी यू सून अगेन। थैंक यू सो मच।